Where did we stop last class? Last class. Where did we stop last class? On what? Henry's law is or? Okay. Can we have a stylus? Where is the stylus? Online students. Somebody should interact online. Ma'am? Ma'am, come now. Let's start. Today we'll do Raoult's law for volatile liquids. Everybody sit. Raoult's law for volatile liquids. Where she's going? They should interact online. They are not. I'm not able to hear them. Huh? They can hear. What about the doubts? If they wanted, how to clear it to you, and how to interact with them? I can't hear. Is any problem in this? Okay. Chalo, let's start. So the today's topic is Raoult's law. Raoult's law for volatile liquids. Volatile liquids. Raoult's law for volatile liquids. ये volatile किसे बोलते हैं सर? The liquid which gets evaporated. Most of the liquids हैं सुनना यहाँ बाद में बाद न्यूमेरिकल्स का ना आज का टॉपिक will discuss only about Raoult's law for volatile liquids. समझ में आ रहा है? Okay. Most of the liquids are volatile. कहते क्या? It's evaporates depends on the temperature. Depends on अगर पानी रखे हैं अब for example the water if you keep at 20 degrees it gets evaporated faster when compared to 10 degrees. Every liquid is volatile. Every liquid is okay. Can you close the door of that? Close the door of that. बीच में आए उनको समझ में नहीं आता और समझ में नहीं आएगा ना यू आर ऑल बी ए स्पेक्टेटर्स सो यू हैव अ डाउट आस्क द डाउट क्लियर द डाउट आज एक टॉपिक के बारे में पढ़ को विल ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चंस सो राउल्ट्स लॉ फॉर volatile liquids मंजी जितना समझ में आया उतना लेंगे फॉर एग्जाम्पल आई टुक two beakers in the two beakers I'll take here petrol कई को सर पेट्रोल लिया सो क्यों तो it is highly volatile highly if you keep open this beaker सुनना यहाँ सुनना पहले जल्दी आना I come 5:40 thinking that you people will be on time by 5:30 कर को now close the door that please lock the door I don't want any disturbance in the class I want the class to flow it should be in the singers sit back Ray. Sit back concentrate on the board now you're from which college Trillium you were there last class you were there in the last class no you were there in the last class no you are supposed to be in the regular to the class if you are not coming to the regular class you'll not understand and this mobile should be kept aside wo sab side mein rakh dalna ho please don't take it things in a slide in a easy way we are equivalently giving what we give a time to the other institutes also and I want you to interact and clear your doubt do well in the competitive exams नहीं सर यहाँ गलत है रेक्टिफाई करो
यहाँ क्लास में, because it is a free coaching class, you wanted to play around it, we don't allow it. We don't allow it. I'm damn serious about that, to give a lecture on the topic what I discuss. I'm damn serious about that. मैं बहुत सीरियस हूँ इसके बारे में. ये टॉपिक क्लियर करना मुझे, और क्वेश्चंस मैंने ले लगे हूँ. I want to solve NEET which are there online questions. Tomorrow when you go back home, you take any questions on the NEET or JEE or CET, you're supposed to solve. नहीं सर नहीं समझ में आ रहा है, पूछो क्वेश्चन. 100 क्वेश्चन हम पूछो, हमें डरते नहीं तुम्हारे से, हमें डरते नहीं है. तुम्हें क्वेश्चन पूछा, हमें डर गया नहीं. And what we talk confidently, we say that. So आराम से बैठ, समझ टॉपिक, घर को जा, बुक ले, whichever the book you wanted to solve the book, come back and tell me, sir, you went wrong here, rectify it. I'll tell sorry and I'll rectify it. Got it? Chalo, let's start this. We are doing Rolle's law for volatile liquids. 2 बीकर लिया हमें, एक बीकर में पेट्रोल लिया. इट इज हाईली वॉलेटाइल, हाईली इवापोरेट होता. समझने के वास्ते, समझने के वास्ते, every liquid is volatile, depends on the temperature. नहीं समझ में आ रहा है? आ रहा है? Liquid A, I've taken in the beaker A petrol. ये खुला छोड़ेगा ना, इवापोरेट आता है, इवापोरेट आता है. समझ में बात? तो इसे क्या करता हूं, क्लोज करता हूं. बीकर बी में नेल पॉलिश रिमूवर लेता हूं, विच इज नथिंग बट एसीटोन. समझ में नहीं आया तो पूछ पूछ क्वेश्चन. इन्हें भी हाईली वॉलेटाइल, इन्हें भी वॉलेटाइल, हाईली वॉलेटाइल. खुला छोड़े, 2 भी लिक्विड इवापोरेट आती है, मुझसे मुझको रखो हमें. अब सिंस इवापोरेट नहीं होता, नहीं होती है, इवापोरेट होता है, the vapors of the petrol will be on the surface of the lid. ये ढक्कन का ना है, ये ढक्कन का ना. तो तुझे सरफेस के ऊपर पेट्रोल के वेपर्स आती, वेपर्स आती. इस ढक्कन के ऊपर, लिड के ऊपर क्या रहती है, वेपर्स ऑफ एसीटोन. समझ में आया? समझ में आया? इसके वेपर ज्यादा रहेंगे, बिकॉज इट इज मोर वॉलेटाइल देन दी बी. रह सकता, रह सकता. या इसके वेपर्स ज्यादा रहेंगे कंपेयर टू, सेम नहीं रहते. डन, क्लियर होगा? दिस वेपर्स exert the pressure. Let us take this as pressure of pure petrol, P naught of A. This vapors exert the pressure onto the surface of the petrol. कुछ pressure exert करा. B, they exert the pressure. This also pure B. How pure it, you know? Mix नहीं हो कोई. The pressure exerted by the vapors of the liquid onto the surface of the solvent is called as vapor pressure of pure liquid A. The pressure exerted by the vapors onto the surface of liquid B. कई को नेल पॉलिश रिमूव ले आ होगा, तो हमें डेली यूज में यूज करती है, मालूम रहता है इन्हें वो वेपराइज होता है अगर को, हाईली वॉलेटाइल कर को. जरूरी नहीं. Every liquid is a volatile. Water is a volatile. समझ? Depends on the temperature. इसका आपको P naught of B. नहीं समझ में आया? समझ में आया? सबको समझ में आया? I take a big beaker. बड़ा बीकर ले लिया. सीन, इसमें से जरा डालिया, इसमें से जरा डालिया, मूछा. अब इसमें क्या क्या है? पेट्रोल एंड एसीटोन. देयर आर वेपर्स. ये वेपर्स ऑफ पेट्रोल, ये आपको वेपर्स ऑफ एसीटोन. अब मैं क्या बोलना कहते हैं, इसे बोलना कहते पार्शियल प्रेशर ऑफ पेट्रोल, पार्शियल प्रेशर ऑफ एसीटोन. कई को पार्शियल कहते हो. इफ अ स्टूडेंट सिटिंग ऑन द बेंच और alone on the bench, we should call it a pressure exerted by the pure student कहते हैं. 2 स्टूडेंट आप बैठ गए तो we should call it as the pressure, partial pressure
exerted by each student कहता है. Each is called as, कई को दो जने ही है कंटेनर में. कौन कौन ही है? पेट्रोल एंड एसीटोन. पेट्रोल एंड, तो इसे क्या बोलना कहते हैं? अब लॉ को जाएंगे. डाउट है कुछ? कुछ भी डाउट है? थिंक एंड टेल मी. You have any doubt? इवापोरेट होता है लेकिन स्लो होगा. हाँ नेक्स्ट. मैं पूछूं, आंसर करती तुम्हें. मैं पूछूं क्वेश्चन ना, या तो तुम्हें पूछो या तो मैं पूछता हूं. सोच को पूछो क्वेश्चन. फुल फ्रीडम. तुम्हारे में दम कहता हो तो दम लगा क्वेश्चन पूछो. हाँ दम लगा होता आंसर कर दो. Yeah, exactly. Good question. Will the petrol and acetone reacts? No, they don't react. नहीं react. Next. React होगा तो fail. Good question. Next. If you open the lid, it gets evaporated. होता. मैं बंद कर को रखियो. होता. No doubt. बंद कर को रखियो मैं. हाँ फास्ट होता. तो उसके मैं ओपन नहीं करना चाह रहा हूं ना मैं. नेक्स्ट. मैं पूछूं, सर ये प्रेशर कांस्टेंट रहता है क्या? इसका प्रेशर थ्रू आउट द टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है क्या? रहता है. कैसा रहता है सर? एक ड्रॉप कन्वर्ट होगा तो लिक्विड एक रेडी रहता बैठने को. ऐसा म्यूजिकल चेयर मालूम है? एक जने उठे तो हर एक जने बैठती है. वैसा एक वेपर्स नीचे पड़ागा तो हर एक रेडी रहता है. सो प्रेशर विल बी कांस्टेंट एट दैट टेम्परेचर. दे आर इक्विलिब्रियम कहते हैं. दे आर क्लियर होगा? यस. अब लॉ को जाएंगे. व्हाट इज द लॉ सेज? Raoult's law for volatile liquid states that Raoult's law for volatile liquid. Don't write. Don't write. Can you close the door? That. Close the door. That. Please do understand. We will solve the questions one by one. Today's topic is Raoult's law for volatile liquid. We will go higher level questions. We'll try to draw the graph. We'll come back to the question for JEE level, NEET and CET level. We'll target on that concept. Graph kaisa aaya padenge. Now, volatile liquid. The Raoult's law for volatile liquid, volatile bolna states that the partial pressure of each component कहते हो parts. इसके कितने पार्ट ही? दो पार्ट ही. एक पेट्रोल एक एसीटोन. The partial pressure of each component is directly proportional to its mole fraction. Partial pressure of petrol is directly proportional to mole fraction of petrol. Partial pressure of acetone is directly proportional to mole fraction of acetone according to law. क्या बड़ी बात है? Simple logic. According to Raoult's law for volatile liquid state that the partial pressure of each component का तो parts कितने parts ही? दो. एक पेट्रोल है एक. So the partial pressure of each component is directly proportional to its mole fraction. So next, since proportionality sign काढ्या, partial pressure is equal to P naught of A XA. Partial pressure of B is equal to P naught of B XB. What is P naught of A? The pressure exerted by the vapors in the pure state. Pure खाली पेट्रोल था. The P naught B आपको vapor pressure in the pure state B. According to Dalton uncle क्या बोलेगा तो उन्होंने क्या बोले? Total pressure is equal to sum of the partial pressure बोले. Sum of the, who told?
According to Dalton's, the total pressure of the container, a container, total pressure of the container is equal to sum of the partial pressure. Sum of the of non-reacting mixture. Non-reacting. So P total is equal to P naught of A XA plus P naught of B XB. सही है. PA की वैल्यू आती है, P naught B की वैल्यू आती है. This is the formula number 1. समझ में आ गया ना? समझ में आया? What is the Raoult's law for volatile liquid? The partial pressure each component. The partial pressure of is directly proportional to its small fraction. और कुछ डाउट? सीधा फुल टाइम देता हूं, सोच समझ को बात कर रहे. डाउट रहा तो पूछ, बिंदास, क्या डाउट पूछ. मैं पूछूं क्वेश्चन इसकी, मैं पूछूं, फिर मैं पूछूं क्वेश्चन, मैं आंसर भी करूं. पूछ. दम है, दम भी रहना ना पूछने क्लास में, दम भी रहना ना क्लास में पूछने. सर 3 लिक्विड लिया क्या करो? 3? Because entire chapter is binary, सिर्फ 2 component है, and he cannot ask you 3 components because entire solution is binary. What is एक solute एक. Now P naught A कर सकती है. Next, since we learnt in the previous class, mole fraction of A, mole fraction of B is equal to 1. Mole fraction of A and mole fraction of B is what? Is equal to 1. Yes? क्या? X चुपके, XB is equal to 1 minus X. 1 minus mole fraction of 1 is equal to plus mole fraction B is always 1. Always 1. अब मैं सब्स्टिट्यूट कर दूं. P total is equal to P naught of A XA plus P naught of B 1 minus XA. कर सकते हो या कोई इक्वेशन 2. इक्वेशन 1 in equation 2. इक्वेशन 1 क्या हो? सेकेंड इक्वेशन. वो आप पूछ, अब मैं करता हूं, सुन ले. P total pressure of the what? Container. Total pressure of the container. ये नहीं, vapor pressure of pure liquid. Vapor pressure of P naught of A, P naught of B, vapor pressure of pure liquid B. X and XB is mole fraction. Correct? Correct. ये और ये सेम नहीं. ये कहीं को यूज करना होगा तो when mole fraction is not given, देखो ना, x से भी देखो ना, xb भी देखो ना. सर कॉन्ट्रडिक्ट स्टेटमेंट बोल रही हूँ सर, एग्जैक्टली ऑपोजिट बोल रही हूँ ना. फिर से हल्लू बोलता हूँ, आई एम नॉट कंफ्यूज. x से भी देखो ना, xb भी देखो ना न्यूमेरिकल में, तब यूज करना से. x से भी देखो ना, नहीं देखो तब यूज करना. सो कैसा सर होगा ये? अच्छा चल, मान को चल, x ए और xb की वैल्यू कितनी है? 1. अब x ए की वैल्यू 1 से कम होना, 1 से ज्यादा रहना, दोनों को मिला को 1 नहीं क्या भाई? अब तो 1 से ज्यादा हो सकता है. फर्ज कर x ए की वैल्यू 0.4 दिया, xb की वैल्यू कितनी आती है? तो मुझे ये फॉर्मूला यूज करके क्या फायदा? फिर मैं उसमें रखता ना. x and xb is equal to 1. Correct? Yes. So x and xb is equal to 1. So I don't want this second equation. The second equation I'm supposed to use when there is no data of mole fraction.
noted of मोल फ्रैक्शन देखो इतना है सर प्रूव्ड बाय न्यूमेरिकल म्हणजे मालूम है सूरत अंदेगेत मालूम हो रहा तुम्हारे सर इतने सब बातें करो को सेकंड फॉर्मूले को गिव एन एक्सप्लेनेशन इन द न्यूमेरिकल करेक्ट नहीं है करेंगे कहता करेंगे तो सब बात आना को सेकंड फॉर्मूले को क्वेश्चन डालो न्यूमेरिकल करो मोल फ्रैक्शन है प्रूव इट करेक्ट नो इज दैट राइट आई डू इट ओके राइट स्टार्ट राउल्स लॉ फॉर वॉलेटिलिटी तुम्हारे से डरती क्या रहा मैं तुम बोला डर आती हमें नहीं तू क्वेश्चन पूछ रहा डर आती है बोल राइट राइट मोल फ्रैक्शन स्टार्ट फर्स्ट राउल्स लॉ फॉर volatile liquids कैसा क्वेश्चन आना बोर्ड्स में और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कैसा आना स्टेट राउल्स लॉ फॉर volatile liquids volatile शुगर volatile की नॉन volatile नहीं है तो खुला रखोगे तो शुगर इवापोरेट होता है तो इट्स नॉन volatile नहीं है सो राउल्स लॉ इज एप्लीकेबल फॉर volatile liquids लिख लो राउल्स लॉ फॉर volatile liquids states that hey, draw karna kya hai you want to draw this up to you whatever you want you do it Raoult's law for volatile liquid states that the partial pressure of each component is directly proportional to its mole fraction directly proportional to its what mole fraction done directly proportional to its what ये लिख लिया P is directly proportional to X है जल्दी लिखना ये फॉर्मूला लिख और PA is directly proportional to XA, PB is directly proportional to XB. होगा? Yes. According to Dalton's, यहाँ लिखना. According to what? Dalton's law of what? Partial pressure. According to Dalton's law of partial pressure. क्या P total is equal to PA plus PB. PA plus PB. Next, P total is equal to A. P total is equal to P naught of A XA plus P naught of B XB. होगा? Clear? Clear? XA plus XB is equal to 1. XB is equal to 1 minus XA. This is equation 2. लिख ले हाँ नोट पॉइंट अगर भूल गया रहा तो सर तुम्हें भूल गई तो मैं कर और डन कैन वी फिनिश सुन ले व्हाट इज एक्सए व्हाट इज एक्सए मोल फ्रैक्शन ऑफ component A in liquid phase in pani liquid phase XA is mole fraction in liquid phase okay आजा sometimes क्या बोलता है examiner calculate the mole fraction of the component mole fraction put the pens on concept of the board now calculate the mole fraction of component A in
वेपर फेस पूछता है, क्या पूछता है? वेपर। तो इसका सिंबल आपको वही है, सिंबल आपको, इसका फॉर्मूला आपको पी ए बाई पी टोटल, क्या फॉर्मूला? पी ए बाई पी टोटल निकाले तो क्या मिलता है? मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेस। अब पी ए की वैल्यू कहता है मेरे बच्चे, पी ए की वैल्यू कहता क्या है? पी नॉट ऑफ ए एक्स ए बाई पी टोटल, और एक टाइम करेंगे, वही है क्या? मोल फ्रैक्शन इन एक्स है क्या? इन लिक्विड फेस, लिक्विड फेस, समझ में आया? एक्स है क्या? मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड फेस, वही है। और सीधा क्वेश्चन पढ़ नीट में, component A has 0.4 in liquid phase mole fraction and 0.6 in vapor phase, सीधा देख क्वेश्चन पढ़। YA and XA टू डिफरेंट मोल फ्रैक्शन, YA को वेपर फेस में, XA को लिक्विड फेस में, समझ में आया? नाउ सर YA प्लस YB, YA plus YB is also equal to 1, also equal to, कर सकते हो? यस, लिक्विड फेस में भी 1, वेपर फेस में। अगर ये टॉपिक समझ में आएगा तो न्यूमेरिकल्स जाता हूं, नहीं सर समझ में नहीं आएगा तो फिर से क्वेश्चन पूछ, डाउट क्लियर करता हूं। अब मैं क्वेश्चन एक सॉल्व कराता हूं, उसके बाद नहीं करता हूं, इसके बाद एक दो प्रॉब्लम सॉल्व करता हूं, अच्छा उसके बाद एक प्रॉब्लम में टच नहीं करता, याद रख ले। उसके वास्ते बोल रहा हूँ, पहले पूछ लियो डाउट्स क्या क्या ही, जब मैं ही पूछा क्वेश्चन आंसर होना बन जाए। अब नहीं समझ में आता तो बोल, बाद में करेंगे, आधा लिख ले। और चल स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। वाई एंड वाई बी क्या मेरे बच्चे? मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेस। पी टी आपको टोटल प्रेशर, टोटल मैं कैलकुलेट मैं कर, तुम्हें दो प्रॉब्लम मैं कर, तुम्हें आराम से बैठ सॉल्व कर को बात चेक करेंगे। लेट्स स्टार्ट। Yes, covered on the question.
मत करेंगे। Can we start? Can we start this question? देख ले ऑप्शन बाद में कॉपी कर लेंगे. Put the pens on, concentrate on the board now. This कब पूछा था ये? 2021 में नीट में. Okay, let's start it. The correct option for the value of the vapor pressure of the solution at 45 degrees. At 45 degrees, चल करेंगे. 45 degrees, 45 degrees, benzene and octane. Number of moles of benzene, 3. Number of moles of octane, 2. तुम ना कैसा मालूम होगा ये मोल्स इच कर को हाँ लिखो है ना मोलार रेशियो कर को इज अ मोल नहीं देता तो वेट देंगे क्या देंगे वेट से वेट बाय मॉलिक्यूलर मास को डिवाइड करा तो आई विल गेट मोल्स या तो वेट देंगे या तो मोल्स देंगे क्लियर होगा मोल रेशियो किसका वो एक बेंजीन का एक ऑक्टेन अब मोल्स मालूम रहे तो no mole fraction निकाले तो mole fraction of A is equal to number of moles of A plus number of moles of B. A कहता 3 ये 2 so 3/5 mole fraction of 3/5 मिलगा म्हणजे mole fraction of B निकाल तुम्हें mole fraction of B मेरे बच्चे सुन नहीं मालूम है तो पूछ क्वेश्चन सो कितना मिलता बोल 2/5 रे बच्चे 2/5 एक 3/5 एक इसे कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं दिमाग में करे जाता ओके फिर बोले उन्हें at 45 degrees vapor pressure of benzene P naught of benzene 280 vapor pressure of octane 420 mm of Hg. What is the formula? P total is equal to P naught of A XA plus P naught of B XB. P naught of A कितना 280 और ये XA कितना 3/5 और प्लस P naught of B कितना 420 तुम्हारा लकी नंबर इतना है बाद 2/5 करेक्ट सो ये 5 ना है 5 5 are 25 तीन बचे 5 6 are 30 करेक्ट ना क्या बचे 56 into 3 कहता है 6 3s are 18 1 carry 5 3s are 15 16 प्लस यहाँ 5 1s are 5 5 8s are 40 दो बचे 5 5 4s are 20 2 4s are 8 2 8s are 16 168 plus 168 करेक्ट क्या बच्चे बराबर है 8 8 16 this 8 8 16 16 1 carry so 12 13 2 2 238 नहीं है 236 2 लिख ले बात देख ले क्या रॉन्ग 336 3 लिख ले 336 और हंदे वो चुपके चकने को कॉमेडी को लिख ले बस अब तो आइडल को लेकर क्या करता हूँ निकले जल्दी जल्दी निकले ना फटाफट आंसर अलग चेक करने का है ना और एक बोलना ना वो कोसा की प्रॉब्लम करनी थी क्या ना सर तुम्हें वो फॉर्मूला दालाल को चुपके पड़ गया ना तुम्हें
Fast, write down, copy down. Over. 336. Oh. Over. Copied. Let's start taking answer. सही है गलत है? Oh, I know about 336. ये करेक्ट आगा ना रे? करेक्ट आगा ना? कैसा किए? Yes. This is how it is. करेक्ट होगा? This is to okay. चल. अब वो इसका करेंगे कहते हैं. कोसा? कोसा की बोले ना सर तुम्हें? क्यों? तो एक काम करो. We'll do one thing. We'll do one thing. वो जो मैं करा नहीं वो सॉल्व वो आंसर देखो ना को. हाँ ये एक काम करो. Don't look into this options. What you do is you try to do. कितने मोल्स ही? लिक्विड है इसके? 5. आजा सुन. कितने मोल्स ही? Y के? Pressure of Y solution having vapor pressure? क्या वो? The vapor pressure of pure and X and Y. Which of the following is regarding true? Okay. ये टोटल एक काम करो. Okay, leave now. कहीं कुछ आपका confusion. बात देखेंगे. ये छेद. ये जर्रा take it out. चलो देखो. टेक इफ यू हैव अ कैलकुलेटर फास्ट टाइम वेस्ट करो. कितना दिया इधर? चलो कॉपी कर लो जल्दी फटाफट. कॉपी दिस एनसीईआरटी क्वेश्चन है. देख लो क्या पूछा. वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय. ओके वेपर प्रेशर. स्टार्ट क्वेश्चन लिख लो पहले. इसमें और उसमें डिफरेंस क्या? प्लीज टेक कैलकुलेटर एंड फास्ट वर्क इट आउट बिकॉज वी डोंट हैव टाइम. व्हेन यू गो बैक होम प्रैक्टिस दिस and get back to me later. Yes? Is that right? अच्छा चल मैं जरा हिंट दे आल. Let me give a hint. ये और वो क्वेश्चन में डिफरेंस क्या बोल. यहाँ ग्राम्स देखो है. हाँ मोल्स देखो. डिफरेंस क्या? ये क्या है? ग्राम्स. वेट देखो उधर मोल्स. तो मैं क्या करता हूँ क्लोरोफॉर्म को ए ले लेता हूँ. डाइक्लोरोमीथेन को बी ले लेता हूँ. समझ में आया? ओके चल. व्हाट इज द फॉर्मूला? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए इज वेट ऑफ ए मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए. वेट ऑफ ए कितना दिया बच्चा? कितना दिया ना? 25.5 ग्राम्स. किसका मोलर मास कितना? 119.5 मोल्स निकल गया. यस. सिमिलर किसके मोल्स निकाल. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी कितना इसका? 40. 40 वेट मॉलिक्यूलर मास कितना? तो मोल्स निकल गया. तो क्या निकल? मोल फ्रैक्शन निकल. किसका? मोल फ्रैक्शन ऑफ ए. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी. फाइंड कर जल्दी फटाफट. डिवाइड कर. एक से फाइंड आउट कर. स्टार्ट.
Take the calculator fast, work it out this. 25.5 divided by 119.5. लिखो. I want XA and XB. XA and XB. ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. ಹೇಳಿ ಸರ್. ಎಲ್ಲಿ ಸರ್? ಹೌದು ಸರ್. ಎಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಮನೆ? ಹಾಂ 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 ಡನ್ ಡನ್. ಆಯಿತು ಸರ್, ಮಾಡ್ತೀನಿ. कितना मिला भाई? एनए कितना मिला? 0.21. एनबी कितना मिला? 0. इसके कितना? एनए कितना मिला? इसके कितना मिला? एनए 21 ना. ये कितना मिला? 47 ना. अब मैं एक्स से आपको 0.21 प्लस 0.42 0.21 डिवाइडेड बाई 0.63 कितना आया? 0.30. ओके, 0.30 आएगा. एक्स से 0.30 रहा तो एक्स बी कितना? क्या एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू 1. एक्स बी इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स ए. सही है. इज इक्वल टू 1 माइनस 0.3 आपको 0.7. प्रीवियस क्वेश्चन में और ये क्वेश्चन में क्या डिफरेंस मेरे बच्चे? हम मोल्स देखो था, यहाँ वेट ग्राम्स और मॉलिक्यूलर मास देखो. समझ में आया? बोर्ड एग्जामिनेशन में भी सेम क्वेश्चन आता. लिख लिया फर्स्ट. क्या जल्दी जल्दी लिखना. और हम बोलते और एक्स से भी मिलगा, एक्स बी भी मिलगा. यस, आ जा. अब होनास म्हणजे टोटल प्रेशर पी नॉट ऑफ ए पी नॉट ऑफ बी देखो है क्या? देखो है. देख मेरे बच्चे, क्या क्वेश्चन पढ़ और एक टाइम पढ़. वेपर प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉर्म 200 mm of Hg and 41.5 क्या? डाइक्लोरोमीथेन. डाइक्लोरो. तो मेरे पास फॉर्मूला है P टोटल इज इक्वल टू P नॉट ऑफ A एक्स ए प्लस P नॉट ऑफ B एक्स बी. P नॉट ऑफ ए आपको 200 इंटू एक्स ए कितना बचे? 0.30. एक्स बी कितना? P नॉट ऑफ B कितना? 41.5. एक्स बी 0.7. मेरे ख्याल से ये मिस्टेक कर डाला है. ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है. 415 रन आसो, यहाँ 41.5 कर को देखो है. फिर भी देखेंगे. चल मान को चल क्वेश्चन सही 6 कर को बाद वेरीफाई कर लेंगे. सुन, मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन में मिस्टेक रहेगा. अगर आंसर नहीं आया तो वेरीफाई करेंगे. बाद में एनसीईआरटी बुक को डाउनलोड करको मैच करको देंगे. मेरे हिसाब से दिस क्वेश्चन शुड हैव 415 रन आता है. इन्हें 41.5 देखो, फिर भी सॉल्व करेंगे. हाउ मच इज पी टोटल? ये क्या था? एक 0 चलेगा तो 20 या को 60. ये क्या था? 41.7. 29.05 ऐड कर 89.05 रहना. हाँ 450 इंच हुआ. देखेंगे चुपके आप कहीं को आप क्या बोलेगा तो नहीं सर तो मैं गलत करेंगे. बात वेरीफाई करेंगे. लिख दे. तो आंसर कितना आना था? 89 पॉइंट. करेक्ट. एनसीईआरटी की एक एक लाइन मुझे मालूम है मिस्टेक है.
बात देख लेंगे, छोड़ सर कहीं कुछ सर एग्जैक्टली देखेंगे, रॉन्ग करेंगे, चेक कर लेंगे ना, अब वो वेरीफाई कर लेंगे, छोड़ो, लेकिन मेथोडोलॉजी समझ में आया, अब आंसर भी वेरीफाई कर लेंगे. 415 is Ranaso. Printing mistake है, प्रिंटिंग मिस्टेक 441.5 में होगा, वेरीफाई कर लेंगे. एक्चुअली ये एनसीईआरटी का है, वर्कड एग्जांपल है अलिरस. तो लेट्स सी आंसर इच है ना कोसा सो 89 पॉइंट कितना है, सो 89 पॉइंट, तो 90 के करीब रहना आंसर. आंसर करीब, विल चेक द आंसर. ओ करेक्ट आ ना, एब्सोल्युटली राइट, करेक्ट है. ओके, अब एनसीईआरटी को जाएंगे. अच्छा, मेथोडोलॉजी देखेंगे. क्या करें मेरे बच्चे, नंबर ऑफ मोल्स निकाले, नंबर ऑफ मोल्स, लेकिन यहाँ 0.3 आए इनको, 0.47 ना, डेसिमल लेको करें. ओके, नो इश्यूज. फिर भी हमने आंसर आपको, ओके, विल गो फॉर एनसीईआरटी लाइन. एनसीईआरटी देंगे, एनसीईआरटी देंगे, एनसीईआरटी. ये क्वेश्चन इसका ही है, आई टोल्ड यू नो, लेकिन फिर भी आंसर सही है आना, हम नो इश्यूज, पहले देख लेंगे हम. क्वेश्चन पढ़ो बाद में, ये एनसीईआरटी का वर्कड एग्जांपल है. आंसर गलत आता अगर को था हमें, फिर भी इट्स, पढ़ो क्वेश्चन है. क्लोरोफॉर्म 204 बोला नहीं भाई, एनसीईआरटी में प्रिंटिंग मिस्टेक रिंग आकर को सोचो, लेकिन देख वैल्यू भी हो देखो 25.5 और 40 ग्राम. क्वेश्चन कंपेयर कर रहा, इज दैट राइट. मैं भी वो सोचा प्रिंटिंग मिस्टेक रिंग आकर को, बट वी गॉट आंसर करेक्ट, गॉट इट. ओके चल अभी से इसे क्या करेंगे ना, डाउनलोड कर लेंगे, डाउनलोड इट. ये लिखो क्या, या प्लीज डू दिस 1.10 वेपर प्रेशर ऑफ, लिख लो, होगा होगा, पहले था लिख लो. वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड, what is that, A and B. Vapor pressure of pure liquid A and B are 450 and 450 and 7 700 and 700 mm of Hg respectively. Next क्या बोले हमने, find the composition of liquid mixture if the total vapor pressure कहता 600 mm of Hg, 600 mm of what, Hg. कौन सी कॉलेज आप, रामायण,
Finished? Now, also find the composition in vapor phase. Leave now. Leave. Let's start. Have look here. छोड़ दो. क्वेश्चन पढ़ लिया. क्वेश्चन तुम्हारे पास है, सॉल्व करेंगे. सर तुम्हें जो बोले वो फॉर्मूला ले लो पहले. वो फॉर्मूला ले लेंगे पहले. व्हाट इज द फॉर्मूला इज? क्या की स्टेटमेंट लिखे ना? मोल फ्रैक्शन नहीं नहीं ये नहीं कहीं के. व्हेन मोल फ्रैक्शन इज नॉट गिवन यूज दिस फॉर्मूला. पहले लिख लेंगे. गिवन पहले लिख लेंगे. P नॉट ऑफ ए कितना दिया सुनो? 450 mm of Hg. P नॉट ऑफ B कितना? 700 what? P total is 600. कांति भी देख ले. क्या ती भी दिया क्या? वेट दिया क्या देख ले क्वेश्चन में? नहीं दिया. देखो है मोल्स देखो है. तो क्या बोले हमें? वे नॉट गिवन विच फॉर्मूला आर सपोज्ड टू यूज. सेकेंड देख लेंगे. P total is equal to P naught of A XA plus P naught of B 1 minus XA. P total 600. This is 450 into XA plus P naught of B. Sorry, P naught of B क्या था? 700 into 1 minus XA. सही है? सही है? So 600 is equal to 450 XA plus 700 minus 700 XA. 600 ये इधर ले लगा तो minus 700. ये 450 XA minus 700 XA. तो 600 minus 700 आपको minus 100 minus 250 XA. Minus minus gets cancelled. XA is equal to 100 divided by 250. That is equal to 0.4. 0. तो मुझे 0.4 मिलेगा. तो XA plus XB is equal to 1. XB is equal to 1 minus 0.4. 0.6. हमें जो बात बोले वो रख लेनी. नोट पॉइंट जो बोले रख लेनी. करेक्ट. XA minus XB is equal to क्या होगा? लेकिन उन्हें पूछा क्या? वेपर फेस में क्या पूछा? So YA is equal to P naught of A XA by P total. P naught of A कितना? 0.4. Sorry, 450. 450 into 0.4 divided by 600. कितना? 0.7 ना. चेक करो. कोसा वॉच में बोले आसमें बात करे तो होता. ओके आई रिपीट इट. क्यों सही 0.3 है. ओके सो हम ना मालूम है YA plus YB is equal to 1. YB is equal to 1 minus 0.3 is 0.7. XA कितना? XA कितना? 0.4. वो लिक्विड फेस में. XB आपको भी लिक्विड फेस में. YA क्या? क्वेश्चन पढ़ो. पूरा क्वेश्चन पढ़ो. कैलकुलेट पढ़ो जी. कैलकुलेट. अच्छा लिख लो. छोड़ो लिख लो. Feeling hot? Feeling hot? Can you increase the speed? Both 10 pieces on the
And the one question answers. Can I go back? Can I go back to the question? Copy down. Online students. It is in NCRT 1.8 in text question. It is in text question. Online students, please check this. अब ये तुम्हें क्या फाइंड आउट करना, ये तुम्हारा ऊपर डिपेंड, क्या देखो है ये तुम्हारा ऊपर डिपेंड करता. स्टार्ट करो. आई विल नॉट हेल्प यू आउट नाउ. यू डू इट एंड लेट मी नो द आंसर. क्या ढूंढना, क्या करना वो तुम्हारा ऊपर डिपेंड करता. स्टार्ट. लास्ट में बोले तो सॉल्व करो. नहीं हुआ तुम्हारा हाथ से. नहीं मिला आंसर.
0.8 सी आ जाओ इधर बाहर देखो what is given lego solve करो जल्दी जल्दी good girl though you go wrong doesn't matter if you go wrong also I'll help you out huh? No you don't I'll check I don't want book side में रखना हमने गिवन लिखो पहले क्या क्या थे गिवन देखो भला तुम सही है गलत हाँ तुम करो करो तुम पहले क्या करेंगे करो बोल सकते ये क्लिक करो पेन पे है yes ah number of moles of ये कितना 1/5 से करो ओके नो इश्यूज करो करो मूव दैट्स इट उधर चले आओ सही है कभी कम डाउन 2 minutes everybody see on the board now correct करिए now moles देखो थे a solution has 1:4 mole ratio number of moles of A को 1 number of moles of B को correct है doubt जाओ करो next Mashallah, good girl. She won the Mashallah, two good. 1.8, okay, 0.8. 3 out of the 120 into 0.8. 0.8. कितना है 84 हाँ 88 हो 88 plus 96 नहीं ऐसा हाथ रखो yes 88 plus 96 88 plus 96 क्या पूछा इसमें नहीं क्या पूछा मोल फ्रैक्शन इन किसके है किसका मोल फ्रैक्शन ऑफ पेंटेन का तो ये है तो वही करो वही इज इक्वल टू ऊपर ऊपर वही इज इक्वल टू P नोट ऑफ ए कितना सो 88 P नोट ऑफ ए आपको 88 P टोटल कितना 184 कितना आया 0.47 ना 88 divided by 184 डिवाइड करो दे 0.4 इधर आ जाओ भाई इधर इधर क्या नाम तुम्हारा खदीजा इधर आ जाओ 2 मिनट आ जाओ देख लेते मिल गया मिला बुक साइड में रखो पूरा इरेज करो इसे ऑन क्लिक करो नीचे बाजू नहीं वो उधर उधर बाजू का अच्छा जाओ क्लिक करो कौन सा आंसर 0.47 कौन सा डी चेक द आंसर Khadija good girl very good super good you understood ऐसा करना डरना नहीं you are not supposed to do this fine अच्छा good it means that you followed the concept okay chalo let's का वो कांजेंगे जेंगे next
अब ये भी क्या करना तुम्हारे ऊपर डिपेंड, मालूम नहीं क्या करना करके। चलो करो, चलो स्टार्ट। क्या करना कि देखो करो। व्हाट इज द आंसर? मिला? क्या मिला? व्हाट इज ही गिवन? पी टोटल फाइंड आउट करना सो। मोल्स देखो है ना। गुड बॉय। क्या नाम? कोसी कॉलेज है। आजा साइड में रखो, तौहीद भाई बुक साइड में रखो। आजा पहले यहाँ क्लिक करो, पेन पेन स्टार्ट करो। क्या देखो है? गुड, करेक्ट है तौहीद। तौहीद भाई बराबर कर रहे हैं। आई आंसर, गुड बॉय। क्या नाम? वेरी गुड, करेक्ट। सही है, सही है। तौहीद भाई बराबर है, आंसर चेक करिए।
सेम क्वेश्चन करे ना, एनसीईआरटी का क्वेश्चन करे ना. चेक दैट. X and XB. 450 and 700. XA is 0.4 and XB is 0.6. Option करेक्ट. करेक्ट नहीं है. कब पूछा था से? CET 2021. Start. Write the question. आंसर आया? नया आंसर मैं सॉल्व करूं? क्या जवाब? नहीं आया. नहीं आया. सॉल्व करो. एटलीस्ट ट्राई टू राइट गिवन. नो चल मैच कर दो.
Concept of the board now. मैं करता हूँ मैं छोड़ो. In a mixture of liquid A and B, if the mole fraction of component A in vapor phase, mole fraction in vapor phase is equal to x1 and x2 respectively. फिर क्या बोला? Total pressure in liquid phase. So XA question mark. P total no, sorry. Total P total. P total is equal to how much is asking. So the formula is P total is sorry. YA is equal to P naught of A XA by P total. YA को X1 is equal to P naught of A XA by P total. So P total is equal to P naught of A XA by X1. और नहीं रहा तो P naught of B अपन P total is equal to P naught of B क्या? P naught of B XB by X2. Correct? और देखेंगे आंसर. कॉपी कर लो, कॉपी करो. Let's see the answer. ये B है ये. 3 ना है. Okay, we'll see. अभी दो ऑप्शन थी ना. कौन सा ऑप्शन ना? What is he asking? P naught of A भी देना है X. Total pressure of the vapor pressure in the mixture. So P total. P total is equal to ये बराबर है X1 नहीं होता. What? C is the answer. P naught of A X2 कैसा? क्या क्वेश्चन हो? चल करें. P total is equal to देखेंगे और एक टाइम. P total is equal to P naught of A X. This is no. This is okay. P total is equal to plus P naught of B XB. Correct मेरे बच्चे? Okay, चला जा. P naught of YA is equal to P naught of A XA by P total. Correct? YA आपको X1 ना? X1 is equal to P naught of A X. ये 2 दे डाला X1 था ना, XA देना था. ओके, इसे 1 रख लेंगे. छोड़, इसे 1 इसे 2 रख लेंगे. X1 by P total. So P total is equal to P naught of A X1 by X. X1 is equal to P naught of A X1. P total को क्या करेंगे? P naught of A XA plus P naught of B XB. फिर भी नहीं आता. Okay, let's check the answers. Where we went wrong? क्या wrong चले गए सर? क्या बार wrong चले? क्या wrong चले गए? Printing mistake. Printing कॉपी कर लेना. We are correct. Okay, चलो जी. Thank you.